guys, I'm Poonam Badgujar, Senior Faculty Chemistry in Vidya Mandir classes. Today we are going to, this is our first chapter where today we are going to cover the separation of substances, questions, discussion, right? This is the worksheet number 12.1 which is on basic level. These are the pictures shown below. You have to say ki which picture represent the what, or you have to write ki which picture represent what. In this I'm discussing the one or two parts of the each and every questions, and remaining you have to do in your notebook as an homework or an assignment, right? बात करते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस पिक्चर सेकंड पिक्चर में क्या है कि सम लेडी शी इज कुकिंग in the kitchen where one utensil is there with the rice and some stones are there. तो वो क्या कर रही है, उसको हाथों से निकाल के अलग कर रही है स्टोन्स को, जो आपका खाने का राइस है या फिर दाल है या फिर पल्सेस है जो भी है. तो ये चीज क्या है बेटा, ये हैंड पिकिंग प्रोसेस है. लास्ट प्रोसेस क्या है, जो लेडी एक स्टूल पे चढ़ के गेहूं को छान रही है ऊपर से, तो और एक हवा भी चल रही है. तो दिस इज द विनोइंग वेयर हस्क आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रेन, right? Match the following. Remaining two you have to do. Next is a match the following. Pond water. If I talk about the pond water is you have to match, right? Match the following. So pond water is heterogeneous mixture, right? Heterogeneous mixture. And the remaining four you have to do by yourself, right? Removing of the large impurities and thrashing solid in gases and winnowing this, right? This is the filling the blanks. Where pebbles are separated from the grain is from the hand picking. Pebbles can be separated from the grain is the hand picking, right? Or okay. Next is the differentiate between the following. Differentiate between the following. I'm just discussing the homogeneous and heterogeneous. So you have to discuss the element and the compound. Homogeneous and heterogeneous mixture. Mixture is anything which you mix together in any ratio is known as the homogeneous, is known as the mixture. Homogeneous mixture where there is no separation layer between the substances and they can't be separated by the physical means, right? Just take an example. You have you can say black tea. The taste will be same from the bottom, and the you can't basically separate them with the help of the physical means. Homogeneous, no separation layer between them. Heterogeneous, if I talk about, just like a buttermilk, where the buttermilk you will find the concentration of the substances at the bottom is very thick, at the top of the glass will be very less. So there is a differences between the layer of separation. No layer of separation is seen in the homogeneous and layer of separation is seen in the heterogeneous, and composition throughout the solution is same in the homogeneous and the composition throughout the solution is different, is known as the heterogeneous mixture, right? Match the following. Again, the match of the following is, this is the 12.2 worksheet. To separate the butter from milk: sieving, filtration, evaporation, sedimentation and churning. Butter from milk is churning. What is happening in this process कि एक मशीन होती है जो पूरा मिल्क लेके उसे एट अ वेरी हाई स्पीड रोटेट करती है. रोटेट करने से क्या होगा, बटर इज लाइटर देन द वाटर और मिल्क आप कह सकते हो. तो बटर विल कलेक्ट एट द top of the that container and you will separate the butter from the milk, right? To separate the mud from water, mud को separate करना है water से. This is the sedimentation and decantation. तो यहाँ पे sedimentation लिखा है. आप थोड़ी देर के लिए वो mud वाले water को, थोड़ी देर glass को या फिर beaker को आप रख दीजिए. Then the mud is heavy, so it will settle down with the help of the gravity. So it will settle down. Then you can decant it. डिकेंट का मतलब मैंने आपको लेक्चर्स में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था, आप वहां पे देख सकते हैं, राइट? तो मड फ्रॉम द वाटर इज सेडिमेंटेशन ओवर हेयर मैचिंग. आंसर इन वन वर्ड. It is the method that is used to obtain salt from sea water.
Salt from seawater, which process we have used is the evaporation, where you have collected the seawater in a very large field and allow it to evaporate with the help of the sun rays, and what you will find after 2-3 weeks, white color salt is there on the ground and the water is evaporated. The process of separation of the salt from the sea is evaporation, right? Remaining you have to do by yourself. Next is the 12.3 worksheet, which is an intermediate worksheet. Give reason for the following. Water is an compound, not a mixture. Okay, this I will explain you over here. See, if I talk about the water has a formula of H2O, where hydrogen is there in the 2 ratio and oxygen is there in the 1 ratio. Hydrogen and oxygen, two different substances there. If I talk about the hydrogen, if I talk about the oxygen, this is a combustible substance. You know that it is a combustible substance. This is a supporter of your fire. This is the supporter of fire, right? ये आग जलाने के लिए काम आता है, दूसरा आग में जलता है, बट दे combine together in such a way, or you can say chemically they are combined together and form a something new substance which is used to extinguish fire. अब ये आग बुझाने के लिए काम आता है, मतलब extinguish fire. That means what? ऑक्सीजन ने सपोर्ट किया फायर को, हाइड्रोजन कंबशन करता है, बट एक नया सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टी ना हाइड्रोजन से मैच हो रही है ना ऑक्सीजन से मैच हो रही है, जो कि आग बुझाने के लिए काम करता है. दैट इज नोन एज द वाटर. दैट इज द कंपाउंड. कंपाउंड में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल मैच नहीं करती है, राइट? बट मिक्सचर, अगर ये मिक्सचर होता तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे ही नॉर्मली कंबाइन होते, नॉट बाय द फिजिकल, नॉट बाय द केमिकल मीन्स, और उनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच होती. That's why it is not a mixture, it is a compound, because hydrogen oxygen are combined together chemically and form a certain new substance which have the new properties, new appearance, and that's why it is known as the compound. Understood? Now a cup of tea is considered to be a homogeneous mixture. This you have to explain by yourself. और cup of tea तो आप रोज ही पीते हो, ऊपर से टेस्ट नीचे से टेस्ट, पूरे कप में टेस्ट तो चाय का एक ही रहता है, राइट? तो आपको खुद एक्सप्लेन करना है why it is an homogeneous mixture, right? Next we have the classify the following mixture as homogeneous and heterogeneous. सैंड एंड वाटर. इफ आई टॉक अबाउट द सैंड एंड वाटर, तो यहाँ पे बेटा आपको एक सेपरेशन लेयर दिखती है. सैंड बीकर के नीचे कलेक्ट हो जाती है एंड वाटर ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है. तो दिस इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द शुगर एंड द मिल्क, तो आप आज क्या करो, एक गिलास में दूध लो, उसके अंदर में 1 चम्मच चीनी लो एंड स्टर्ड इट वेल so that the sugar will dissolve in it, and what you will find, the taste of the sugar from at the top of the glass and the bottom of the glass will be the same. That means it is an homogeneous mixture जहाँ पे कोई भी separation की लेयर नहीं दिखाई दे रही है, right? Remaining you have to do by yourself. Now this is again an intermediate worksheet where 2.12.4 we have reached. Which of the following is the odd and give reasons? I'm discussing the fifth one, evaporation, sieving and condensation. Evaporation का मतलब है कि पानी भाप में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बेसिकली कन्वर्शन ऑफ द वाटर इनटू वाटर वेपर्स. कंडेंसेशन इज द वाटर वेपर इनटू वाटर लिक्विड. बट सीविंग क्या इसमें से मैच कर रहा है? सीविंग का मतलब क्या होता है? छानना किसी भी चीज को विद द हेल्प ऑफ द, यू कैन से कि सीविंग के लिए जो भी हम लोग यूज करते हैं उससे छानना. क्या ये चीज इसमें कुछ भी कर रही है, प्ले रोल कर रही है? नहीं कर रही. तो सीविंग इज एन ऑड इन बिटवीन ऑल द फॉलोइंग, राइट? ना ये वाटर से रिलेटेड है, ना ये वेपर्स वाटर वेपर से रिलेटेड है. तो इवेपोरेशन इज द L2V जाना एंड कंडेंसेशन इज V2L आना, वेपर्स टू लिक्विड में कन्वर्ट होना. बट द सीविंग इज डिफरेंट, दैट इज द बेसिकली सीव करना, सॉलिड पार्टिकल को सॉलिड में से सेपरेट आउट करना इज द सीविंग, राइट? जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट है. आई कैन डिस्कस द सेकेंड वन, ओके?
बहुत hard easy. Stone and husk are removed from the rice before cooking. ये आपको पता ही है why. And I'm discussing the second one कि water is known as the universal solvent. Why water is known as a universal solvent? Because water can dissolve the most of the substances it can dissolve in it, like sugar, salt, ये dissolve कर लेता है. That is the part of the solid. ये liquids को भी अपने अंदर dissolve कर लेता है. जैसे कि आप बात करते हो जूसेस है एंड अल्कोहल ड्रिंक्स है, ये सब उसमें भी डिसॉल्व कर लेता है. गैसेस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व हो जाती है. एग्जांपल इज एरेटेड ड्रिंक्स, जो कि आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है. तो बेसिकली वाटर कैन डिसॉल्व सॉलिड, मोस्टली सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबको डिसॉल्व अपने अंदर कर लेता है. आपको एक एक एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, आपको अपने आंसर्स में एग्जांपल भी लिखना है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. And hence it is an universal solvent, right? Next is the advanced level. I am discussing with you. Your elder sister has prepared a glass of orange juice for you. How did she prepare the orange pulp? How did she separate the orange pulp from the orange juice before serving you the drink? देखो, आपकी कोई एल्डर सिस्टर होगी जिसने आपके लिए जूस बनाया है भाई, ऑरेंज जूस. वाओ, इस लॉकडाउन में तो कोई जूस वूस पिला दे तो बहुत अच्छी बात है. दिस इज द शी इज प्रिपेयर द ऑरेंज जूस फॉर यू एंड शी नीड्स टू सेपरेट द ऑरेंज पल्प फ्रॉम द ऑरेंज जूस. एक तो जूस होगा, उसके अंदर में छिलके भी हो सकते हैं, राइट. अब उस पल्प को वो कैसे सेपरेट करें? ऑब्वियस सी बात है, दोनों की साइजेस में फर्क है. लिक्विड आराम से छन्नी से छन सकता है. एग्जांपल, आप चाय बना लो तो चाय पत्ती और चाय देख लो. तो वैसे ही ऑरेंज जूसेस एंड ऑरेंज पल्प की बात करते हैं. तो अगर मैं इसको सीविंग कर दूं विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर साइज ऑफ द सीविंग, तो आराम से ऑरेंज जूसेस एंड द ऑरेंज पल्प सेपरेट आउट हो जाएंगे. सीविंग के ऊपर में जो होगा सरफेस पे वो पल्प आ जाएगा, और दैट यू कैन से कि रेजिड्यू में पल्प आ जाएगा एंड फिल्ट्रेट में ऑरेंज जूस आ जाएगा, राइट. Next is I'm discussing the third one. Second one you have to discuss, write down in by your thinking, right? Mustard oil can't be separated from the mixture of oil and water by filtration. Can you tell why mustard oil can't be separated? Mustard oil can't be separated from the mixture of the oil by filtration. से मैं oil and water को separate out नहीं कर सकती हूँ. Why? Because दोनों के दोनों ही liquid है. अगर दोनों ही लिक्विड है तो फिल्टर पेपर में से दोनों पास आउट हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, दोबारा से मुझे मिक्सचर ऑब्टेन होगा. तो हम कौन सा मेथड इसके लिए यूज करें? हम लोग इसके लिए यूज करते हैं decantation. If you put the beaker, take the oil and the water and stir it well and wait for some minute. What will happen? The oil will float on the surface of the water because its density is lighter than the water. तो वो नीचे बैठ जाएगा पानी और ऊपर आपका ऑयल आ जाएगा. आप बीकर को उठाइए बेटा, जैसे मैंने डिकेंटेशन आपको एक्सप्लेन किया था ना कि एक बीकर यहाँ रख दीजिए, दूसरा बीकर यहाँ रख दीजिए, इसके अंदर दो लेयर से धीरे धीरे इस लेयर को इसके अंदर ट्रांसफर करिए. दैट इज द डिकेंटेशन. से आप लोग ऑयल एंड वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते बिकॉज फिल्ट्रेशन से दोनों के दोनों लिक्विड फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाएंगे. अंडरस्टूड गाइज? Remaining questions you have to do by yourself in your assignment or in your notebook and show it on time, right? Thank you guys.